So we'll talk about impact test. The impact test basically it is testing your toughness of the material. If your vessel incurs your collision, that's a sudden impact. So if the sudden impact is there, what will be the load the steel can take for failing or breaking? So here basically notch is made on the other side of where your test, this is your test piece. So you have a V notch done. A V notch basically is a cut made here to create a crack. And on the other end, you are getting hit by the pendulum piece. So this is a piece here in the pendulum. You are creating a potential energy by increasing the height because potential energy is mgh, that is m your mass, g is acceleration due to gravity, and h is your height at which it is placed. Then suddenly it is released. So the hammer is going to hit here and roll over and come on the other side. Now this diagram you will not understand how it rolls over, just make this diagram accordingly. It hits and goes across. It will not take the specimen along. Specimen is already fitted here. So now your potential energy is converted into kinetic energy, that's half mv square. The same thing like you have your dams, water falls from a height, so potential energy falls down and then it moves the turbine with kinetic energy. So your potential energy is changed over the kinetic energy when this is released, and with force this hits and goes away, sudden force. So not a constant force, sudden force. So the crack is going to appear here. At what height the crack is a maximum that they check, and that is the impactor. So this is a destructive test to check the crack on the test piece. Now Charpy V notch is Charpy had made this test. It is Charpy V notch test because you're making a V notch on the other side. So a heavy striker at the end of the pendulum provides a blow. So it is providing a blow because of the potential energy. It breaks the specimen piece. If it doesn't break, then your crack will occur and the crack is going to widen. So this is done to determine the ability of the metal to withstand fracture under shock load. So it is a standardized high strain rate test which determines your amount of energy absorbed by the material during fracture. Because the potential energy is converted to kinetic energy which is absorbed by the material, and that creates the fracture there. So the absorbed energy of the material will determine the notch toughness. We make a notch like, for example, the sachets you have for ketchup and all. You will have a cut there so that you can remove or you can cut out from that area. That's a weakened area. So notch is a weakened area to create a fracture. So the apparatus consists of a pendulum of known mass and length that is dropped from a known height to impact a notched specimen. So notch is basically the cut we are doing on the other side, and the energy is transferred to the material. Can be inferred by comparing the difference in height of the hammer before and after the fracture. Because in pendulum, if you release from certain height, the pendulum goes to the other side also at the same height. But here when the pendulum is released, the pendulum is not going to the same height again on the other side. So the difference between them is the energy absorbed by the material for the fracture. So the notch is a sample affected, and it is necessary that notch has to be a regular dimension and geometry. It should not be a different dimension.
it has to be a regular dimension for various metals. So that is your notch test. And you measure the height with the scale here. The graduations are marked here. Now the thing is, it is releasing at this height, but it is reaching only this height. So the difference between that is the height, is the amount of energy absorbed by this material. It was not going to the same height on the end of the string. Now the fifth test we'll talk of creep. Creep basically is when you have a high temperature, you will have a progressive deformation at constant stress. सर नोच वाला फिर से बताना सर एक बार. नॉच वाला फिर से समझाएं. पहले इससे समझाते हैं. हिंदी बोले कि इंग्लिश में बोलो, ये बताओ पहले. किसमें चाहिए आपको? मैं दोनों में समझा सकता हूँ. जिसमें आपको ज्यादा समझ आ रहा है ये बताओ. हिंदी में ज्यादा समझ आ रहा है तो हिंदी में समझा दो. हिंदी चलो में हिंदी में समझा. समझा. हिंदी में समझा दो. ये पीस है आपका टेस्ट. स्टील का पीस है, ठीक है. हमने इधर कट मारा है, नॉच मारा है. नॉच क्यों मारा है? क्योंकि अगर हम नॉच नहीं मारेंगे तो पूरा एरिया क्रैक हो जाएगा. तो हमें स्पेसिफिक एरिया में क्रैक कराना, तो हमने नॉच मारा है. अब इसी के ऑपोजिट साइड में हम हिट करेंगे. अब क्या है कि ये पेंडुलम है. पेंडुलम क्या होता है? अगर आप पेंडुलम एक हाइट पे रिलीज करो तो दूसरी हाइट पे सेम जाएगा. इधर रिलीज, इधर छोड़ा, इधर से छोड़ा तो इधर आएगा उसी हाइट पे, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा. तो पेंडुलम चलता रहता है. लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है कि आप सर्टेन हाइट पे छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी एंड इसको हिट करेगी स्पेसिमेन को यहाँ पे. उसके बाद इसको नहीं देखो कैसे लेके जाएगा. ये आप ये डायग्राम को उसको छोड़ो. ये हिट करके निकल जाएगा, घूम के निकलता है. इसको नहीं सोचो कि डायग्राम में तो ये तो पीस को ही ले जाएगा. डायग्राम ऐसा बना है, ऐसे लगेगा कि पीस को ही साथ में ले जाएगा. पीस को नहीं ले जाएगा, हिट करके टर्न करके निकल जाएगा. तो इसकी जो स्विंग होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी इसके इस पॉइंट पे थी. जो आपकी स्विंग थी ज्यादा, यहाँ स्विंग हो जाएगी कम. अब डिफरेंस क्या हो गया? दोनों के स्विंग का डिफरेंस हो गया कितनी एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हुई और जिसके कारण फ्रैक्चर हुआ. ये समझ आ गया? ये समझ आया? जी सर जी. अब आ गया समझ ना. क्योंकि देखो वो इतना 2 पेज आपको समझाऊंगा वो नहीं समझ आएगा. जो हिंदी में समझाया वो समझ आ जाए. इसलिए मैंने कहा डायग्राम से समझो. अब आता है क्रीप टेस्ट. आप लोगों ने सब पुराने टाइप के बल्ब देखे हैं ना, इनकैंडेसेंट. अब तो आगे एलईडी एंड सीएफएल आए, फिर एलईडी आए. बट जो पुराने टाइप के बल्ब हैं जिसमें टंगस्टन की फिलामेंट होती थी, याद है? वो कितना गर्म हो जाता था. वो इस हीट के कारण इट यूज टू क्रिएट दैट लाइट. एलईडी का अलग चीज पर्पस है, सीएफएल का अलग पर्पस है. लेकिन जो अर्लियर इनकैंडेसेंट लैंप्स थे जो 40 वॉट के थे, एकदम गर्म हो जाते थे. तो बिकॉज वो टंगस्टन एकदम गर्म हो जाता था, वो 1700 डिग्री सेल्सियस पे इतना गर्म हो जाता, बहुत हाई टेम्परेचर को झेल लेता है टंगस्टन. सडनली 1 साल के बाद आवाज आती है टिंग, और वो टूट गया. अब वो टूटा कैसे? आपने तो नहीं तोड़ा ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हुई कि टूट गया, ऐसा नहीं था. रीजन था क्रीप. Now the tungsten filament was subjected to वैक्यूम. इसलिए क्रिएट किया था उसमें बल्ब में, so that एयर से उसकी लाइफ कम हो जाती. तो वैक्यूम क्रिएट करते थे in that bulb to extend the life of that tungsten filament because it was subjected to creep. So you had high temperature going on in that through the filament. The heat was too much and it was bearing for a long time. So basically, when you have got a high temperature at constant stress, you'll have a progressive deformation. I'll just show you that and then we'll come to this. अब बेसिकली ये एक लोड हम टेंसाइल का ही कर रहे हैं. इसमें क्या है, लोड वही है जैसे हम टेंसाइल स्ट्रेस में कांस्टेंट लोड डालें. यहाँ कोई फ्लक्चुएटिंग लोड नहीं है, इट इज कांस्टेंट लोड. इसमें क्या है, डायग्राम में कांस्टेंट लोड है जो हमने टेंसाइल स्ट्रेस में किया था, पहला नंबर.
डिफरेंस क्या है कि हम उसको हाई टेम्परेचर में ही कर रहे हैं, इस बार को हम एलोंगेट कर रहे हैं एट कांस्टेंट लोड एट हाई टेम्परेचर, नॉट एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो बेसिकली ये जो हो रहा है ये टेंसाइल नहीं हो रहा है, ये क्रीप हो रहा है, बिकॉज आप स्ट्रेस तो कांस्टेंट है लेकिन हाई टेम्परेचर में कर रहे हो। तो इसमें जो रप्चर होगा वो क्रीप फेलियर होगा, नॉट अ ब्रेक पॉइंट, बट क्रीप फेलियर है। अब वो कैसे है वो समझाता हूं एक और डायग्राम से। क्रीप क्या है, इसके 3 फेज होते हैं। देयर आर 3 फेजेस इन दिस क्रीप। ये क्रीप स्ट्रेन है, ये टाइम है। तो पहला फेज में क्या है, क्रीप जो है ये बेसिकली आप इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन हो रहा है। इस पे आपने इस टेम्परेचर से शुरू किया, आपका इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद इसका ग्रेडियंट बेसिकली डिक्रीजिंग विद टाइम है, नॉट इंक्रीजिंग विद टाइम। यहाँ स्टार्टिंग फेज प्राइमरी फेज, ये तो कांस्टेंट स्ट्रेस से बेसिकली ये कांस्टेंट स्ट्रेस हो रहा है, बट यहाँ चीज अलग है। हम जब टेंसाइल करते हैं तो कांस्टेंट स्ट्रेस कर रहे हैं, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ, इसमें टेम्परेचर बढ़ा। तो प्राइमरी में क्या हो रहा है, स्लोप जो है, ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है विद टाइम। यहाँ इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, प्राइमरी फेज। So the strain is not proportional to time. It is not proportional, but it is decreasing with time. It is not increasing with time in the initial phase. Second phase is the secondary phase, जहां strain is constant at basically the ratio is constant, जो basically delta E by delta T time is constant. तो आपका लाइन जो ग्रेडियंट है वो स्लोप कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट। ये सब स्लोप ग्रेडियंट आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इसका रेशियो सेम है। तो डेल्टा ई बाय डेल्टा टी इज कांस्टेंट इन द सेकेंडरी फेज। इन द टर्शियरी क्रीप, द थर्ड फेज, योर स्लोप इज इंक्रीजिंग नाउ, नॉट डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। नॉर्मली आपने देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में स्लोप वाज डिक्रीजिंग, एंड में जाके ब्रेक पॉइंट होता था, बट एंड में यहाँ स्लोप इज इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और फाइनली जाके आपका रप्चर होता है। दिस इज क्रीप रप्चर। सो दिस इज टर्शियरी क्रीप। सो you have primary creep, secondary creep and tertiary creep, which is quite different than the stress strain graph we had studied. तो यहाँ क्या है, your load is applied under high temperature, तो furnace दिखाया हुआ है। So you are doing creep testing, and then the strain is plotted with time, and then you have creep failure. अब आपको theory कराते हैं, because you have to make diagrams, understand it, then you write. आप क्या करते हो, रट्टा मार लेते हो, भूल जाते हो डायग्राम, नंबर कट जाते हैं। यू हैव टू मेक डायग्राम्स फॉर ऑल दीज, ऑल टेस्ट। डायग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर कटेंगे। सो क्रीप इज अ हाई टेम्परेचर प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन एट कांस्टेंट स्ट्रेस। So it is a relative term dependent on the material involved. Normally it is for the boilers which have got high pressure, high temperature gas turbines, jet engines of your aircrafts, ovens, and whatever application involves high temperature under load will have creep test, creep failure. So understanding this high temperature for metals is very useful when you have to design a failure resistant system. So that's why you have to understand what is creep. क्रीप को तो मतलब है जैसे आपके क्रीपर होते हैं, धीरे धीरे चलते। आपका स्नेल क्रीप कर रहा है, ठीक है, तो वो क्रीपर है, धीरे धीरे। क्रीपर जो आपके प्लांट के क्रीपर्स है वो धीरे धीरे मूव करते हैं, तो ये स्ट्रेस भी धीरे धीरे फेलियर होता है इसका। सो दिस इन्वॉल्व्स अ टेंसाइल
specimen under constant load maintained at constant temperature which is high, constant high temperature. लेकिन इसमें वो ऐड कर देते हैं constant high temperature, not constant temperature but constant high temperature. So your measurements of the strain are recorded over a period of time. So you have a primary creep or stage 1, a secondary creep or stage 2, a tertiary creep which is stage 3. So primary creep basically the slope is less, decreasing with time. The creep increases until stage 2 it is reached, and then stage 2 is a secondary creep. This is steady creep because delta epsilon is the same ratio is constant as per the time. So delta E by delta T is constant. So this is referred as a steady state creep. Third is a tertiary creep. There your strain is increasing basis your time. So it's accelerating as the cross-sectional area of specimen decreases due to necking. And then you will have internal voiding decreases the effective area of the specimen. So if your stage 3 is allowed to proceed, then your voids are going to coalesce, and then the crack will occur, crack propagation will occur, and the fracture will occur. So this is your creep test and the stages of creep. Creep has been understood by all, or you want to repeat? Creep सबको समझ आ गया कि नहीं? Yes sir. आ गया, चलो अब आते हैं, आखिरी टेस्ट है फटीग टेस्ट. फटीग का मतलब थकान. हम थक जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, ऊपर नीचे उतरते हैं, थक जाते हैं. तो शिप कब थक जाता है? जब पुराना हो जाता है. 15 साल पुराना हो गया, 18 साल पुराना हो गया, 20 साल पुराना हो गया, तब उसमें फटीग आता है. फटीग क्या है? ये बार बार हॉग सैक होने से और सी कंडीशंस, उसकी जो प्लेटिंग है बहुत पतली हो जाती है एंड क्रैक आ सकता है. तो आपका ईएसपी या एनहांस सर्वे प्लान जो है उसमें फटीग चेक की जाती है. कैप है, कंडीशन असेसमेंट प्रोग्राम जो है टैंकर्स का, उसमें फटीग चेकिंग की जाती है, ऑफ योर असेसमेंट की जाती है प्लेटिंग की. ये ईएसपी और आपने पढ़ा है क्या? ये आपके ओरल में कई बार पूछा जाता है. व्हाट इज एनहांस सर्वे प्रोग्राम, व्हाट इज योर कैस, व्हाट इज कैप. अब ये सब मैं तो पढ़ाऊंगा नहीं, बट आपको पता है कि नहीं पता है? तो पहले पढ़ा था सेकंड मिड के ओरल्स के लिए. सेकंड मेड ओरल पढ़ा, तो आपका मेड ओरल में भी पूछेंगे, क्योंकि आपके जितने सर्वेज हैं वो सब पूछेंगे. कैश कैप, मैं तो सेकंड मेड पढ़ाता हूँ. हाँ बोलो, कि पढ़ाऊँ आपको इसके बाद? है क्या करना है, कराऊं? हाँ करा देना सर एक बार. पहले खत्म तो करूं इसको, टेस्ट तो खत्म करूं फिर कराऊंगा ना. चलो करा दूंगा, फास्ट कराऊंगा. कैश कैप और ईएसपी आपको करा दूं, क्योंकि कई फेज 2 वाले मेरे को पूछते थे बाद में, ये क्या चीज वो क्या चीज, ओरल में पूछते. ओरल के बाद वो बाहर निकल के पूछते हैं, सर ये बताओ वो बताओ. तो एक बार मैं आपको बता दूंगा, ये ओरल में पूछते हैं ईएसपी क्या है, कैश कैप क्या है. ठीक है, तो पहले इसको करा दूं, उसके बाद मैं वो कराऊंगा. हीट ट्रीटमेंट ये पहले करा देता हूँ. चलो, तो फटीग टेस्ट क्या है कि आपकी जो टेस्ट पीस को हम कंप्रेस करते हैं, टेंसाइल टेस्ट में डालते हैं, कंप्रेस करते हैं, लगातार करते रहते हैं. रिपीटेडली वी आर डूइंग इट इन दैट मशीन. ये वाली मशीन है, तो इसमें हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, फिर एलोंगेट कर रहे हैं, फिर कंप्रेस कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं. तो ऑल्टरनेटिव हम फोर्सेस लगा रहे हैं. उसके बाद चेक करते हैं कि भाई यहाँ कहाँ क्रैक हुआ.
तो दिस काइंड ऑफ अप्लायंस या तो वो वर्टिकली करेंगे या हॉरिजॉन्टली करेंगे. हॉरिजॉन्टली हम ऐसे कर सकते हैं. तो वी हैव द लोड बेयरिंग, मेन बेयरिंग, मोटर. यहाँ भी लोड बेयरिंग है. सो यू आर elongating it, then you compressing it, then elongating, compressing. So you have a maximum tension. आपको पता है मैक्सिमम टेंशन और आपका दोनों ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस में ये ग्राफ ऐसा आएगा. तो आपकी फटीग लिमिट आती है. तो वेसल की एक हम फटीग लिमिट सेट कर देते हैं कि भाई इस पॉइंट पे फटीग लिमिट हमने पता लग गया. इस पे कितने और कितने कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन जिसको हम कहते हैं कितनी बार करें. तो ये प्रोसीजर 50 बार करें, 100 बार करें, 200 बार करें कि क्रैक आएगा. तो दैट बिकम्स योर फटीग लिमिट. तो नॉर्मली वी डू नॉट ट्राई टू एक्सीड द फटीग लिमिट. लो इंडिकेटर में वो फटीग लिमिट आती है, बिकॉज इफ यू एक्सीड योर फटीग लिमिट then your life of the ship will be decreased, it will sink faster. आपके सपोज 10 साल की लाइफ कम हो जाएगी. इफ यू आर putting too much of stress, fatigue stress on your vessel which is exceeding the limit, the life of the vessel will be reduced. तो ये आपका स्पेसिमेन दिया गया. अभी एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, फाइजर के वाइस प्रेसिडेंट लिखा था कि वैक्सीन से लाइफ लोगों की कम हो जाएगी. अब पता नहीं कितना सच है कि वैक्सीन इज गोइंग टू रिड्यूस द लाइफ ऑफ whoever is receiving the vaccine, because it is going to damage your internal organs in the long run. I don't know how much truth is, but that was the ex-vice president of that vaccine making company. तो आपकी फटीग लिमिट क्रॉस कर देगी वो वैक्सीन, तो आपकी लाइफ कम हो जाएगी. So fatigue test basically a subject is specimen is subject to number of alternating stresses, and the number of these alternating stresses which produces a fracture is noted. So here you can find out the ability of the metal to withstand repeated alternating stresses. So your test is to generate fatigue life. How much will be a life in this fatigue? What will be your crack growth data? What areas are your critical locations or demonstrate the safety of structure which can have fatigue? जैसे डर्बीशायर की क्लास ऑफ शिप्स से 66 फ्रेम में वो फ्रैक्चर हो रहा था. So Derbyshire sank in 2 minutes, and I think one more ship also sank, sister ship sank. So other ships were dry docked and उस एरिया को उन्होंने ठीक किया था because that 66 फ्रेम पे क्रैक होता था. So full scale fatigue test may be required for the safety of structure which can have fatigue, can generate your fatigue data, can identify your critical locations on ship where your fatigue can occur, and it can also determine your widespread fatigue damage. तो फटीग आ गया समझ. हीट ट्रीटमेंट से पहले आपको फिर मैं दूसरी चीजें कराता हूँ. ये समझ आ गया कि नहीं फटीग? इसमें किसी को क्वेश्चन है तो पूछो. और इससे रिलेटेड अब मैं ईएसपी आपको करा दूंगा जिसमें आपका एनहांस सर्वे प्रोग्राम है, जिसमें आपकी फटीग चेक होती है और कैप में भी चेक होती है. So these are your audits and inspection on tankers. You have your IMO, ILO conventions, classification societies, insurance companies, cargo oil majors, ship owners economic incentive. You have statutory class rules requirements, insurance requirements, commercial requirements. So here with this basis you have initial, annual, intermediate, periodical and renewal surveys in conjunction with class.
And under these, you will have safety equipment, safety construction, radio, load line, MAPOL, IGC, IBC, ISM, and ISPS. These are all under flag state and port state control area. They're going to check for all types. So, CAS is mandatory for tankers, and therefore your insurance inspection, they are going to check it. Enhanced survey program is also mandatory for oil tankers and bulk carriers. For your commercial requirements, you have your OCIMF for SAR inspection, oil majors, right ship, green award functions for CAP, condition assessment program for hull, machinery, structure, cargo operation management. So this is for your oil tankers, chemical tanker, gas carrier, and bulk carrier. So that is CAP. That is voluntary. CAS is mandatory. So in condition assessment scheme, we check what kind of corrosion in your tanks. So this is as per MAPOL 7378 to meet your information on rate coating, identify your defects and substantial corrosion, evaluate your condition of anodes. So CAS is applicable for 5,000 tons dead weight and above of 15 years and over, date of delivery, and oil tankers subject to provisions of this regulation. तो ये requirements है, ये आप बाद में पढ़ लेना, आपको basis पढ़ा देता हूँ. CAS is validity 5.5 years. So inspection is carried out with class renewal or intermediate survey. So this is harmonized system of surveys. So your hull area is covered, your coating condition for main structural element in tank is checked. So your complete close-up of all ballast tank is done. Minimum complete close-up of one cargo tank is done, and remaining 30% cargo tank inspection is done. So minimum close-up inspection will be of one cargo tank complete. Validity of thickness measurement is 18 months and inspection completion time is 18 months. So here your fatigue assessment is not done in your CAS, but in CAP you will have fatigue assessment. So this is voluntary, done by ISCS. There is no complete harmonization with other surveys. So your CAP requires your fatigue assessment. CAS does not. So oil majors will require your CAP. So requirement of oil majors to, and then the purpose for your this is to check your rate steel condition, identify defects and areas of substantial corrosion. Then your evaluate your condition of anodes. So it is applicable for tankers of more than 15 years of age, above 20,000 dead weight, and as per validity is normally 2 to 3 years as per your oil major requirements. So this is your condition assessment program. Schedule is along with your renewal or intermediate survey. It will cover your hull, machinery, and cargo system. So main structural elements in cargo tanks and coating condition, vessel's overall strength is rated. Complete close-up of all your ballast tank and minimum completed close-up at least 1/3 of cargo tanks. So if you have 12, so 1/3 will be 4 cargo tanks have to be completely close-up done, close-up survey. Close-up survey means you can touch the structures. So from top to bottom, they check in the dry dock condition. I had done a close-up survey during sailing as master. That time we had floated a raft and I had gone in the tank. When we are one master was doing navigation and I was in command and I was doing all surveys. So I had done this close-up survey along with surveyor. We'd gone in tank, we'd filled up the entire tank, and then we had deballasted slowly to keep checking all around in the raft. So validity thickness measurement 12 months, inspection completion time 6 months. So अब आपको ESP करा देता हूँ. सर एक क्वेश्चन था. हाँ बोलो. सर्वे शिप पे फिर फटीग टेस्ट कैसे करते हैं? मतलब कुछ अभी सारा तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी वेल्डेड फिटेड किया गया ऑलरेडी, तो उसको अभी फटीग टेस्ट कैसे किया जाएगा एक पार्ट का कि यहाँ पे क्या उसका डिफॉर्मेशन है या नहीं है? अल्ट्रासोनिक से करेंगे.
ओके सर, यूटीएम से ही मतलब यूटीएम किया तो मतलब उसी से फटीग चेक टेस्ट होगा। किया गया। हाँ, सॉरी सर। फटीग टेस्ट नहीं, नहीं फटीग मेजरमेंट करेंगे, टेस्ट नहीं होगा। फटीग टेस्ट तो होता है उसका स्पेसिमेन निकाल के मशीनरी में डालते हैं, तो अब उसमें डालते हैं। फटीग टेस्ट नहीं हो रहा है इन शिप। आप उसी का प्रोटोटाइप, सपोज वो स्टील है, उसका प्रोटोटाइप को, उसके सेक्शन को ले जाओगे इन योर लैब एंड उधर फटीग टेस्ट करोगे। शिप पे कोई फटीग टेस्ट नहीं होता। फटीग मेजरमेंट होगी, नॉट फटीग टेस्ट, वो फर्क है। ठीक है। फटीग मेजरमेंट इज डन बाय चेकिंग योर थिकनेस ऑफ प्लेटिंग। अभी मैं करा रहा हूँ ईएसपी, चलो उसमें बताता हूँ कि कैसे चेक करते हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये फटाफट करा रहा हूँ, आपके पास 13 मिनट है, उसको फटाफट खत्म करता हूँ। So basically ESP जो है that is provided by your company to your flag state and accordingly आप program बनाते हो। They approve it, then you do this. So flag state फिर क्लास को भेजता है, क्लास अप्रूव करती है, उसके बाद ये शेड्यूल बनाया जाता है कंपनी से कब कब सर्वे होना है। So your surveys on ship is annual survey, intermediate survey, renewal, dry dock. Enhanced survey क्या होता है? Enhanced survey is basically certain areas you check for fatigue in respect to your hull and structure of bulk carriers and oil tankers. So basically यहाँ आपका एनुअल जो हो रहा है, आपको पता है कब करना है, स्टैट्यूटरी सर्वे, ड्राई डॉक, इंटरमीडिएट एंड रिन्यूअल। इसके अलावा एक एनहांस सर्वे होता है जो bulk carriers of 20,000 deadweight and above. 2 surveys will carry out jointly after the bulk carrier has passed 10 years of age, and all your subsequent renewal surveys or intermediate surveys will be carried out. Of bulk carriers of 1 lakh deadweight and above, intermediate survey between 10 and 15 years should be performed by 2 surveyors. So when it is commenced, renewal survey will be commenced on the 4th annual survey and progress during the succeeded years with a view of completion by the 5th anniversary date. So a survey in the dry dock should be part of renewal survey. So minimum 2 inspections to be done within this 36 months period. Maximum interval is 36 months. So two surveys to be done of the ship's bottom within 5 years period. So ships of 15 years or over, inspection of outside of the ship's bottom should be carried out in dry dock. For ships less than 15 years, alternate inspections should be of the ship's bottom not conduct conjunction with renewal survey may be carried out when your ship is floating. In any other kind of survey, your renewal, intermediate, annual or other surveys have the scope of foregoing ones. You have thickness measurement of structure in areas where you have close-up survey to be carried out. So what areas you are checking in this ESP will be cargo holds, hatch covers, pipings, ballast tanks, hull plating, watertight bulkheads. So here you have to do overall survey of the cargo tanks. This means survey needs to go to have good visual inspection of the cargo hold, and close-up survey will have detail of structural components within the close visual inspection range of surveyor. So that means he can touch and see. आजकल तो ड्रोन से भी करते हैं जल्दी, बट अगर वो अप्रूव करे तो ड्रोन कैन कम वेरी क्लोज एंड गिव यू फोटोग्राफी। सर इसमें वो थिकनेस मेजरमेंट भी होता है क्या? हाँ होगा, जहाँ आपको सस्पेक्ट होगा वहाँ थिकनेस मेजरमेंट होगा। क्लोजअप सर्वे का मतलब नहीं कि पूरे टैंक का अल्ट्रासोनिक गेजिंग करा जाए, ओनली एरियाज वेयर दे सस्पेक्ट वहाँ गेजिंग होगा। बिकॉज आप हाथ लगा के चेक कर रहे हो ना, तो आप चेक कर रहे हो अगर वहाँ कोरोजन हो रहा है तो वहाँ फिर अल्ट्रासोनिक करेंगे। सो क्लोजअप सर्वे इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रिन्यूअल सर्वे and each part of cargo hold need to be hand reach range of the surveyor. हाथ से टच करके बता सकता है कि वहाँ कोरोजन है कि नहीं है। तो अगर ड्राई डॉकिंग में स्कैफोल्डिंग लगाना पड़ता है, हमने तो स्कैफोल्डिंग नहीं लगाई, हम तो सेलिंग में ही कर रहे थे, तो कंपनी का टाइम बचा लिया था। तो इसमें क्या है, आपका जो प्रोग्राम है इट हैज़ टू बी डेवलप्ड बिफोर द रिन्यूअल सर्वे। तो 6 महीने पहले ये प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें आपकी डिटेल हो जाएगी व्हाट एरियाज टू बी इंस्पेक्टेड और व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग दिस सर्वे। 8 मिनट है, जल्दी कराते हैं।
इसमें आपका जैसे ये आपकी इंफॉर्मेशन क्या क्या आएगी. So you have your collection information about coating, corrosion of sister ships, analyze hull damage, analyze hull damage of sister ship, hull damage of general experience, areas where you have got high risk. Then you have location of thickness measurement and close-up survey. तो किस एरिया की thickness measurement करनी है और किस एरिया की close-up करनी है वो determine कराओगे. That is the survey program and that is accepted by administration and ship owner. So कौन से एरियाज होंगे? तो आपके जैसे ये पॉइंट्स आते हैं. सो क्लोजअप सर्वे आपका ए एंड बी है, टैंकर्स का अलग, बल्क कैरियर्स का अलग है. सो दिस इज लेस देन 5 years. ये सब आप पढ़ सकते हो, नेट से निकाल के आप पढ़ सकते हो. सो इसमें और डिटेल हो जाएगा. मोर देन 15 years में काफ़ी डिटेल पे आपके इंस्पेक्शन होंगे. तो ये सब आप डाटा आप निकाल सकते हो फ्रॉम योर नेट और एनी बुकलेट. सिमिलरली ये जो NX2 है दैट इज फॉर योर बल्क कैरियर्स, NX1 जो था फॉर टैंकर्स था. तो ये सारे आपके डाटा दिए हैं. तो इसमें आपका क्वेश्चनर होगा. बिफोर सर्वे प्रोग्राम शिप ओनर हैज टू कंप्लीट अ क्वेश्चनर and has to provide any hull detailed deficiency during PSC inspection, any hull related non-conformity during SMS, cargoes, previous history which were corrosive, condition of coating. Ship owner response is considered when developing your survey program. So suppose you've got a high sulfur coal, then that area has to have strict inspection. Then your which areas you will have close-up inspection, that is the minimum requirements of ESP. So your damage history has to be taken into account of your sister ship also. And then your critical areas, which are the critical areas which have substantial corrosion, like these one the areas. Suppose the original thickness is T and T is a minimum allowed thickness. So suppose your reduction allowed during the corrosion is 10% and 75% of this allowed you have already corroded, so that becomes substantial corrosion. So this is the allowable margin for corrosion, and if you are already within the 75% of this allowable margin, then it is substantial corrosion. So that areas has to be checked thoroughly. So these formulas you can learn on your own. So your overall close-up survey is done, thickness measurement is done, minimum required thickness, so allowing for your wastage, kitna wastage diya hua hai, so what is minimum thickness allowed, what is the damage history and critical suspect areas. Then your meeting will be held for survey planning, and then your renewal survey कब होगा वो check करेंगे. Meeting is held for between your ship owners, surveyors, master chief engineer and measurement company. So then they describe the schedule, execution of thickness measurement, extent of close-up survey. So survey is carried out as agreed and as per survey program, and the thickness measurement company will carry out the thickness measurement of the areas. Now they'll agree the areas where thickness measurement is done, not that entire ship is going to be checked. So then the UT gauging will be done with the class surveyor and ship owner's representative, which is your superintendent. And then you can extend your scope of your thickness measurement if you suspect other areas also. Then your reports have to be generated, your condition evaluation report. What is the actual condition of tank coating? Is it good, fair or poor? That has to be mentioned. So if it is only minor spot rusting, it is good. If it's got breakdown, local breakdown, that is fair, which is a light rusting of 20% or more. Poor when you have more than 20% of breakdown of coating, or hard scale of 10% or more, there you have poor condition of coating. So that areas are determined. And then your substantial corrosion areas which have done of 75% of your margin, those are your substantial corrosion areas. So this is a report being prepared, the thickness measurement report, and this is a report where the red areas are where the thickness is poor,
So then you send the report to flag state, and then you know which areas have to be attended to, which platings have to be changed. So you have an ESP file where you have HUD related reports and evaluation of your condition evaluation report and thickness measurement report. So that has to be maintained by the master. So condition evaluation report will arrive 1 month after completion of renewal survey. The master can convey to the surveyors of they can check the condition evaluator report. तो ये आपका ये तो आपको बता दिया. सो कंक्लूजन क्या है कि आपका पता लग जाता है किस एरिया में आपका स्ट्रेस कहाँ है, फटीग कहाँ है, कहाँ आपको रिपेयर कराने हैं, विच यू कैन डू इन योर ड्राई डॉक. अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन? ESP को फटाफट करा दिया मैंने. Okay, the screen is there. So today we'll be doing your heat treatment. I hope you can hear me now. So your heat treatment are 4 types, which are your annealing, your normalizing, hardening, and tempering. So 4 types of heat treatment are there, and basically you're changing the structural, chemical, and physical shape of that steel by heating it above eutectoid temperature and then cooling, the type of cooling required there. So heat treatment is a group of industrial, thermal, and metalworking process when you change the physical and chemical properties of a metal. And this is metallurgical process used for many manufacturing processes, including glass. As I had said last time, you have got tempered glass. So tempering is done for making it tough. So that's why you have tempered glass on your mobile too, because that is tougher than your mobile screen itself. So heat treatment involves the use of heating or suddenly cooling or chilling, normally to extreme temperatures to achieve your desired result. So it will be either hardening the material or softening the material or normalizing the material. So your 4 methods are annealing, normalizing, hardening, and tempering. So the first method is annealing. When you are heating 20 to 30 degrees Celsius above your critical temperature, which is differing from metal to metal, normally it is around 730 or 740 degrees Celsius. So you are heating to 20 or 30 degrees above that. So suppose it's 750, so you are heating to 770. Then once you're heating to that temperature of maybe 30 degrees above your critical temperature or critical point, you're holding that temperature for a certain time so that your material gets converted basically in the molecular level. So the transformation is from your cementite to maybe perlite or cementite to austenite. So those kind of transformation is required. So the holding time is there for transforming that material at the molecular stage. Now, once your material is transformed, once you're holding that temperature for certain time, then you're cooling at a very slow pace. So the cooling is, rate of cooling is about 50 degrees per hour. So that means if you are heated to about 700 to 750 or 800 degrees Celsius, so bringing down to the base temperature of 40 degrees or 50 degrees, that means you're going to take 16 hours to cool it. So how your cooling is done? So this slow cooling is done in your sand bath. So you have a sand bath. Who's calling? Just a second, somebody is calling me.
Some false cause was there. Okay, you're cooling in a sand bath. Sand bath means under sand, because sand basically the temperature will not vary very much. So under sand, the rate of cooling is reduced. So what you're doing is heating that metal above critical temperature, which is eutectoid temperature of 730 or 740 or more, depending on the metal, about 20-30 degrees above this, holding that temperature so that your transformation is taking place at the molecular level, that is cementite to pearlite or cementite to austenite, and then slowly cooling it. So the slow cooling is done in a sand bath. So your temperature cooling rate is about 50 degree per hour. So what is the purpose of annealing? So basically, when it's a very hard metal, you're making it soft. See, when if you do very sudden cooling, then it becomes very hard. So you do slow cooling, so it will become soft. You're making it more elastic. You're making it more ductile. You're reducing your internal stresses, because a lot of stresses are built up by making it hard. So you can do annealing to eliminate your internal stresses. So you're making it soft, elastic, ductile, and eliminating your internal stresses. Now your annealing here is basically full annealing process. What we're doing is heating. Suppose this is a eutectoid temperature. So you're heating to above A3, that is 20-30 degrees above A3, which is your eutectoid temperature, and then slowly cooling it. So your internal stresses are relieved, your ductility is restored, your toughness is restored, your grain size is refined, your chemical non-uniformity and gaseous content is reduced in the steel. So it is a process involving heating above recrystallization temperature, which is eutectoid temperature, the dotted line A3, holding at certain time. So certain time you're holding it as per the specification and slowly cooling. So this is your full annealing. Partial annealing is basically, we will not do partial annealing or subcritical annealing. Subcritical annealing is done below your eutectoid temperature, but what we are doing is in your course is your full annealing, not partial annealing. So you are heating above the recrystallization temperature or eutectoid temperature, and the stresses are softness is done, ductility is improved, strength is improved, toughness is improved, internal stress is removed, grain size is refined, your non-uniformity gaseous contents are removed. So your three stages are recovery, which is softening through removal of dislocations and internal stresses, recrystallization because you're holding it, so nucleation of new strain-free grains are there, grain size is refined, grain growth is there or coarsening of grain is there. That's why, because you're doing slow cooling. So you are heating above this critical temperature, holding, and then slowly cooling to transform the material. The second one is method is normalizing. So normalizing is basically resetting a material, like you resetting your computer. So जैसे पहले था, resetting it, that is normalizing. So agar it was too hard earlier and now you made it soft, you're normalizing it, so that means you're making it hard again. If it was too soft, you're making it hard by hardening. So by normalizing, you're making it soft as it is. It was at the initial stage. So it's a heat treatment where your metal, which is more ductile and tough, after which is subjected to thermal or mechanical hardening process. Heating and slow cooling alters the microstructure of the metal, which in turn reduces its hardness and increases the ductility. So here again, you are heating to 30 degrees to 50 degrees above critical temperature.
Annealing was 20 to 30 degrees above critical temperature. Annealing was cooling at 50 degrees per hour. That cooling rate was there. In this, you are not doing in sand, but you are doing in still air. So here you are cooling just at room temperature or still air without any fan, without any AC. So you're normalizing the material. So what is the purpose here? Is restoring your original properties to the metal. You're correcting the structure of overheated steel. You are relieving the stresses and improving the machinability of the carbon and low alloy steel. Machinability, that means you can cut in machine parts. So we are making them less hard. If it is too soft, then you're hardening and strengthening the steel. So basically, you're resetting the structure of the steel by normalizing. And this is also done 30 degrees heating above critical temperature. Now the thing is, holding of that time is not mentioned here, which you have to hold in annealing. Here you're not holding, you're again cooling in still air. So you're heating 30 degrees above, 30 to 50 degrees above critical temperature and cooling in still air. It is not very slow as your annealing. So you are normalizing your material as it was before or resetting it. So here your steel rail is heated above critical temperature by 30 to 50 degrees. Then you're cooled in surrounding still air. So that is normalizing. Now we come to the third process. Now this process you might have seen on the roadside where those what is that nomads which are moving from place to place, they are staying on the roadside and in shanties and preparing implements like your sickle or whatever the material for gardening they are preparing, and suddenly they're heating in the coal and then putting in water which is sizzling. So that is the process of hardening. So suddenly putting in water, they're quenching the material, making it hard. So that process is quenching or hardening, that is making the material too hard. So this is again heated 20 to 30 degrees above critical point. You're not holding the temperature. You're not holding that temperature for certain time as annealing for transformation. After you're heating to 20 to 30 degrees above critical temperature, you're suddenly cooling it. So that means the sudden cooling is absolutely changing the structure of atoms. It becomes too hard. So suddenly cooling is known as quenching, and the steel rapidly drops the temperature. So within four or maybe in 1 minute, entire cooling takes place. So you're immersing in metal in a quenching bath, which can be air, or very cold air, or water, or oil, or salt water, or molten salt. Brine is salt water. So you're cooling in either of these quenching baths to sudden cool it, to suddenly change the structure, which makes it too hard. So here again, this is holding that heat. Here they are not mentioned, but we have to hold that heat for 10 seconds. So I'll just mention here. We'll be holding that temperature for certain time. And then quenching it, so suddenly cooling it, you're holding to certain time and then slowly cooling it.
Suddenly cooling it. So quenching is sudden cooling. Just write here, sudden cooling. So the metal is heated 20 to 30 degrees above critical temperature or eutectoid temperature or recrystallization temperature, holding at that temperature for certain time and suddenly cooling it, which you can do either in air, which are the quenching baths, air, water, oil, brine, molten salt. So you're ramping up the temperature, holding at that heated temperature for a certain time, and then suddenly cooling it, which is quenching. So in 3 seconds, you're coming back to the original temperature. Maybe 3 plus 5 seconds or 10 seconds, you are coming back to original temperature, which is maybe 50 degrees or so. So this sudden cooling will harden the material. So the purpose here is to make it hard, to improve your wear resistance of tool steel, improve your tensile strength for structural steel, for improving your yield strength for spring steel, because the spring is hard. So you're improving yield strength there. So that is the third process. Now, the last process we are doing is tempering. So hardening, you're making it hard, and tempering, you're making it tough. So normally tempering is done after hardening, because once your material is soft, you made it hard. Now you're doing tempering to make it tough. Now this is done below your eutectoid temperature. This process is quite different than your other processes. In all your three processes, you are heating above your recrystallization temperature or eutectoid temperature or critical point. But here you are not reaching the critical point. You are quite below your critical temperature, and then you are either suddenly cooling or cooling in air. So here you are heating a metal to about 250 degrees or 300 degrees, which is much below the eutectoid or recrystallization temperature, holding on that temperature for certain time, depending on the mass and degree of toughness required for that material. And either you are doing sudden cooling, which is quenching, or cooling in air. So what is the purpose of tempering? Now, if you are making it too hard, you have a lot of stresses inside and brittleness in this. So you are reducing your internal stress and making it less brittle. Because if you do hardening and if you don't do tempering in time, then the material is going to crack. So the first purpose is to reduce your internal stress and internal brittleness. Then tempering is done. Second is adjust the mechanical properties of workpiece after quenching. The workpiece has high hardness and brittleness. In order to meet the different performance requirements of various workpieces, you are adjusting through tempering by making it hardness, strength, plasticity, and toughness. So the second purpose is to make it tough. First was reducing your internal stress and brittleness. Second is making it tough. And third is you're stabilizing the metallographic structure to ensure that deformation does not take place in future. Because if you just make it hard, it'll crack in future. So the fourth advantage is your cutting performance of some alloy steels are improved by tempering. So these are the four processes of tempering for heat treatment. So tempering your hardened steel is very tough, very brittle and hard, but not tough. So if your small impact is made on these kind of hard steel, the fracture will occur. So you're improving your steel by making it tough by tempering it.
So little strength and hardness is removed in this, but that doesn't matter because the steel is becoming tough. So this is a subcritical temperature heat treatment because you are doing it below, much below your eutectoid temperature and improving your toughness of hardened steel. So you consist of reheating of hardened steel to a temperature below your lower critical temperature, held for certain time, and slowly cooling in air to room temperature. That is your tempering. So any questions on heat treatment? Any questions on heat treatment? No, sir. Okay, you understood. Not very difficult. So whenever the things are there, you have to Normal first thing write. theoretical, sir. अरे theoretical तो है लेकिन एग्जाम में गड़बड़ करते हो. एग्जाम में पता है क्या कर देते हो? अनीलिंग आता है लिख देता हो हीटेड टू 20 to 30 डिग्री सेल्सियस हो गया जीरो. अरे नहीं सर, वो वैसे थोड़ा नहीं। नहीं वो किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया, किया है. सर, अगर मैं बोल रहा हूँ उसमें 2 से 10 लोग 230 डिग्री हीट करके क्या होगा स्टील को? नहीं तो नहीं वो कॉमन पता है सेंस क्या वाला। लिखते हैं, वो लिखते क्या है, नहीं कॉमन सेंस है बट क्या लिख देते हैं, रट्टा मारा. पूरी तरह ये रट्टा नहीं मारते, आधा रट्टा मारा समझे नहीं. 20 to 30 डिग्री सेल्सियस लिख दिया. अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखते हैं वो, और उसके बाद जीरो मिलता तो बोलते हैं जीरो क्यों मिला. मैं बताता हूँ क्या लिखते हैं. ये जब एग्जाम का टाइम आता है ना तो फिर आप वही लिखते हो. मेटल इज हीटेड टू 20-30 डिग्रीज, ये छोड़ देते हैं. रेड जो मेन है लाइन ना तो ये छोड़. क्रिटिकल अबव क्रिटिकल टेम्परेचर वही छोड़ देंगे तो फिर ये यही वही तो मैं कह मिलेगा। रहा हूँ. बाकी सब लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे तो हो गया जीरो, बात ही हाँ खत्म सर। हो गई. भाई आपने 20-30 डिग्रीज हीट किया तो उसमें क्या हीट हुआ कुछ, उसके बाद आप लिख दिया 50 डिग्रीज पर आर किया तो मेन चीज तो छोड़ दी तो जीरो मिलेगा अंडा. हाँ हाँ सर। अब फिर अंडा मिला तो बोलेंगे मुर्गी कहाँ गई. यार तो तो फिर ये इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, अगर बस एक शॉर्ट नोट्स आएगा तो उसमें सिर्फ एक्सप्लेन बना ये दो जो कि प्रोसेस। देखो क्या है, अगर आपने गलती भी की और हम्म आपने ग्राफ आया तो आपके हम्म। मार्क्स जीरो नहीं आएंगे ना. फर्क समझ गए. हाँ इसका सर, मतलब वो तो आप, समझ रहे हैं। अब जैसे शॉर्ट हाँ, नोट्स के लिए, अगर उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, कितना टेम्परेचर हीट करा, कैसे कूल किया, हम्म किधर कूल किया, हम्म। एडवांटेज क्या है, और एक छोटा सा ये नहीं बनाना बट ये बना दो ऐसे हाँ ही चलिए, फ्री हैंड बना. ठीक है, ये बना। ओके सर, लेकिन ये बना दे। एडवांटेजेस लिखना है, एडवांटेजेस लिखना है. ओके ठीक सर, है, जो एडवांटेज। पर्पस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये लिखना है. नहीं लिखोगे तो ये ओके भी नंबर जाएंगे. तो ओके सर। मेन क्या है, प्रॉपर उसका प्रोसेस क्या है, पर्पस क्या है, एंड डायग्राम. ऑल द थ्री आर रिक्वायर्ड. रट्टा ही है ऐसी ओके बात सर। नहीं, पर रट्टे में गड़बड़ करते हो. तो उसमें 3-4 लोग ये गड़बड़ कर देते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है. वैसे तो चलो आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि 50% पासिंग है, 4 क्वेश्चन स्टेबिलिटी के हो जाते हैं. वहां तो स्कोर कर लेते हो, यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया सर ये चलेगा. तो इजी है सर। इसी तो है लेकिन एग्जाम के टाइम आप गलतियां करते हो ना ये वाली, तो मैंने आपको सिर्फ पॉइंट किया कि ये गलतियां ना करो. हाँ सर। ये गलती होती है, सिली मिस्टेक है. तो उसको बचाने के लिए ना अगर आपने एक डायग्राम बना दिया, जैसे ये डायग्राम बना दिया, तो उसमें क्या है कि डायग्राम के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ना. बोरिंग हो जाता है ना फिर, इसीलिए क्या. हाँ सर। देखो आपके पास टाइम होता नहीं है, टेंशन हो जाती है कि ये इतना अभी क्वेश्चन कहिए. मैं कहता हूँ पहले आप अपनी सारी स्टेबिलिटी कर लो, या तो पहले जो जानते हो वो कर लो. जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो पहले अटेम्प्ट करो. ये नहीं कि सीक्वेंस वाइज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, डोंट डू इट सीक्वेंस वाइज, वी डोंट रिक्वायर सीक्वेंस वाइज. जो आपका कंपलसरी है वो सेक्शन अलग है, सेक्शन ए सेक्शन बी आता है. ठीक है, सेक्शन ए में आपके स्टेबिलिटी के 3 क्वेश्चन आएंगे एंड एक शिप कंस्ट्रक्शन का ड्राइंग विद एक्सप्लेनेशन आएगा. हो सकता है मिडशिप सेक्शन हो कुछ और हो, दैट यू हैव टू ड्रॉ एंड एक्सप्लेन और डिस्क्राइब. तो वो तो कंपलसरी है, वो तो एक सेक्शन हो गया. बाकियों में जस्ट सी विच वन यू नो फर्स्ट, उसको पहले लिखो, जिसको कम आता है वो बाद में लिखो. उसमें यू आर नॉट गोइंग टू डू मिस्टेक्स देयर. We'll do the types of steel.
एवरी बैच के तो रिवीजन चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी। स्टील टाइप्स हो गया हमारा। एक था क्या, लाइंस प्लान, ग्रेड्स ऑफ स्टील करते हैं चलो, देन वील कम टू मिडशिप सेक्शंस। एक स्ट्रक्चरल फायर प्रोटेक्शन भी कर देंगे चलो। ग्रेड्स ऑफ स्टील के बाद स्ट्रक्चरल फायर प्रोटेक्शन एंड देन वील डू मिडशिप सेक्शन। अब मिडशिप सेक्शंस आर 9 इंक्लूडिंग केमिकल टैंकर, तो 9 मिडशिप सेक्शन। अब जो ग्रेड्स आपकी स्टील की हैं विच आर ए बी डी एन ई, सी तो नहीं है, ए बी डी एन ई, तो ये अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज हैं। कार्बन कंटेंट ये सब याद करना पड़ेगा, व्हाट इज ए ग्रेड, कहाँ यूज होता है, अगर आ गया तो, अभी तक तो आया नहीं है। बी ग्रेड क्या है, डी ग्रेड क्या है, ई ग्रेड क्या है। सो ये द कार्बन कंटेंट इज 0.21 मैक्स, मैंगनीज इज 2.5 times this percentage, so 2.5 into 0.21 हो गया। सिलिकॉन इज 0.5, ये तो नॉर्मल उतना ही रहता है। फॉस्फोरस इज not 0.05 but 0.035, which is lesser than required for your mild steel. Mild steel was 0.05, this is 0.035. Sulfur is 0.035, no aluminum here. UTS is 400 to 520, yield strength is 235, percentage elongation is 22. So this is suppose high tensile grade of A grade is used, तो उसको कैसे लिखेंगे, AH36। तो 36 हो गया आपका स्ट्रेक नंबर। तो हाई टेंसाइल स्टील ऑफ ग्रेड ए अगर यूज किया है तो 36 विल बी योर स्ट्रेक नंबर। H is your high tensile steel, A is grade A steel. So grade A steel temperature for impact test is not applicable. At the same time, grade AH steel impact temperature जहां high tensile steel है, that has to be carried out in 0 degree Celsius. A grade steel को high impact test at low temperature नहीं किया जाएगा, but high tensile A grade will be carried out at 0 degree Celsius. So it is used in majority of ship structures like your mild steel ही है, bulkhead में use होगा, which is less than 20 mm thick, tank top, superstructure, non-strength decks, these are grade A. Now we come ग्रेड ए to, हाई टेंसाइल यूज हो रहा है ना उसमें। अगर वो हाई टेंसाइल है तो आपके डेक पे यूज कर रहे हैं उसको, हाँ सर। डेक पे यूज कर अच्छी, रहे हैं ना हाई टेंसाइल, हाँ क्योंकि आपका क्यों हाई टेंसाइल यूज कर रहे हैं, बॉटम प्लेटिंग में भी यूज कर रहे हैं। हाँ। Why we are using that is because, बताओ क्यों यूज कर रहे हैं हाई टेंसाइल, क्यों यूज कर रहे हैं डेक प्लेटिंग, ये तो बताया हुआ है आपको। क्यों, हाँ। एक क्या है वो, कहाँ से डिस्टेंस हो रहा है सबसे ज्यादा, कौन से एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस है, एन से वो एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस आया हुआ है। न्यूट्रल एक्सिस, चल फिर से एक बार आपको बता दें, ये आप लोग बार बार, अभी आप लोग का रिवीजन चल रहा है फिर आप भूल रहे हो। सपोज आपके ओरल में क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर छुट्टी हो जाएगी ना, कि भाई आपका डेक की स्ट्रेंथनिंग क्यों करते हैं, बॉटम प्लेटिंग की स्ट्रेंथनिंग क्यों करते हैं, ये पूछ लिया क्वेश्चन तो फिर आप लोग गए ओरल में। इसलिए कंसेप्ट समझो। बेसिकली आपका मैंने डायग्राम बनाया हुआ, देखते हैं कहाँ बनाया है, बहुत सारे डायग्राम बनाते ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्या था वो, न्यूट्रल एक्सिस। ओके, HIDKLMNO, ये वाला। सो ये जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा। ट्विन डेक में कभी हम कोई हाई स्ट्रेंथ लगाते नहीं है, क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रल एक्सिस के आसपास। बॉटम प्लेटिंग में this hog sag will be more, deck plating में hog sag will be more, so that is because your distance from neutral axis is maximum.
तो दिस इज योर Yes, न्यूट्रल sir. एक्सिस। Neutral axis maximum. Okay. हाँ ठीक है, ये याद रखो बस, क्यों इसको स्ट्रेंथनिंग करते हैं, बिकॉज दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो कोई भी अगर रॉड है हम उसको बेंड करते हैं तो जो सेंटर ऑफ द रॉड है वहाँ स्ट्रेस कम होगा, एजेस पे ज्यादा होगा, Edges पे ज्यादा होता है. Yes. एजेस पे ज्यादा होगा, सीधी बात है। तो शिप को अगर एक बीम लो तो टॉप का एज और बॉटम का एज में सबसे ज्यादा होगा, अगर हॉग होगा तो Yes. टॉप एज का Deck और क्या keel. होगा, Deck and हाँ keel. अगर आपका हॉग होगा तो आपका, चलो आपको एक कंडीशन बताना, हॉग होगा तो ऊपर का प्लेटिंग में कौन सा स्ट्रेस होगा, बॉटम प्लेटिंग में क्या स्ट्रेस होगा, चलो ये बता दो, ये पढ़ाया हुआ है, अभी पढ़ाया है, 4-5 दिन पहले पढ़ाया है। हॉग हो गया तो Hog डेक तो प्लेटिंग में ऊपर की तरफ shear होगा ना. शेयर होगा, हॉग होगा तो ऊपर की तरफ शेयर। मैं बल्कहेड की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो यार आप लोग भूल भाल जाते हो, अभी सब पढ़ाया, सब मैंने अभी बताया था सारे स्ट्रेसेस क्या हैं, फिर भूल गए। बताओ यार तुम लोग यार एग्जाम में तो यार ये ओरल में भूल जाओगे, चलो मैं अभी डायग्राम देके समझाता हूँ। सर अभी ओरल में बहुत टाइम है सर. जो भी है टाइम है तो फिर बाद में आपको, अभी तो अगर समझ आ गया तो ओरल में सब समझ आ जाएगा। अभी तो ये सर आपका न्यूट्रल मतलब हाँ सर. टाइम है ना, तो मैं करा रहा हूँ, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अब हॉग हो रहा है, ये स्ट्रेस, ये कौन सा स्ट्रेस है और यहाँ कौन सा स्ट्रेस है, ये बताओ। यहाँ क्या स्ट्रेस है, कंप्रेशन ऊपर स्ट्रेन. टेंसाइल स्ट्रेस है, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस है, ये खिंच रहा है, ऐसे खिंच हाँ रहा है भाई, हाँ सर. यहाँ खिंच रहा है, स्ट्रेस ये टेंसाइल स्ट्रेस है, और यहाँ कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस हो रहा बस ठीक है, अब ये अब समझ आ रहा है, सामने है. डायग्राम हाँ बनाया। हाँ सर. अच्छा, स्ट्रेस और कंप्रेशन. तो दोनों के स्ट्रेस अगर पूछ ले किसी ने, तो वो ओरल में सिंपल है, उसका मूड अच्छा है, चलो ये पूछ लिया। अब आप बोलोगे नहीं हमें तो पता ही नहीं है, तो बोल देगा आपको तो बेसिक ही नहीं मालूम स्ट्रेस का। अब हम कहते हैं कि सीआरपी पेंट डेक पे क्यों नहीं लगाते, चलो बताओ क्यों नहीं लगाते, ये फेज 1 का क्वेश्चन था, अब लोग तो करके आए हो। क्लोरीनेटेड रबर पेंट को डेक के ऊपर हम क्यों नहीं लगाते, भूल गए, फेज 1 अभी मुझे नहीं किया। पता. तो तो पड़ मैं जाएगा सर सर मेरा फेज 1 इससे। 5 साल 4 साल हो गया सर मुझे फेज 1 की. अच्छा वो, हाँ ठीक ठीक है, जो अभी करके आए हैं उनको भी तो नहीं मालूम, अभी जो करके आए हैं उनको भी नहीं मालूम। जो एस चीफ ऑफिसर पूछेंगे सीआरपी पेंट डेक पे लगाओगे क्या, अब बोले हाँ हम तो लगाएंगे, नहीं लगाओगे क्योंकि वहाँ हॉक सैग हो रहा है, क्रैक्स वो पड़ हॉक जाएंगे सर. सैग है, टैंक पे नहीं लगाते सीआरपी पेंट को, हाँ ये सर, टैंक में लगा, क्रैक्स पड़ जाएंगे सर उसमें. क्रैक हो जाएगा यार, वो इतना मोटा पेंट होता है, स्ट्रेच करता है, उसमें बेसिकली जो रबड़ के है ना, क्लोरीनेटेड रबर पेंट है, तो इसमें रबर का जो पार्ट्स है बेसिकली वन ऑफ दोस लैटेक्स का ही पार्ट होता है, वो स्ट्रेच करता है। लेकिन अगर इसको डेक पे लगाओगे तो हॉक सैग होता रहेगा, तो वो क्रैक हो जाएगा, पूरा ही निकल जाएगा, पील ऑफ हो जाएगा। अदरवाइज ओके हम सर. टैंक पे लगा सकते हैं, समझ गए, इसीलिए डेक पे नहीं ये लगा। सर समझ गया सर. तो वो टैंक्स में लगता है, तो बैलेंस टैंक्स. बेटा ये ओरल का क्वेश्चन हो जाता है, एग्जामिनर का पता नहीं है ना, एग्जामिनर बोलेगा आप तो फेज 1 करके आए हो, आपको तो मालूम होना चाहिए, नहीं। जी अब हाँ क्या सर. है, वो तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, पाइल लैडर में कौन सा पेंट लगाएंगे स्टेप पे, पायलट लेडर. हाँ पाइल लैडर के स्टेप पे कौन सा पेंट लगाएंगे, सपोज पायलट पेंट लेडर पे लगाना भी है, कहाँ पेंट लगता है सर पायलट लेडर में. अगर सपोज स्टेप पे पेंट लगाना हो तो कौन सा पेंट लगाएंगे, अगर लगाना हो तो एंटी स्किड पेंट, यार स्लिप नहीं करो, सर हाँ. एंटी स्किड पेंट हो गया, ये नहीं हुआ। बाथरूम में आप एंटी स्किड हाँ लगाओगे, सर. स्लिप कर जाओ, पानी आए तो सीधा सुर हो गया, खत्म, एक पलटी मारा और खत्म हो गया, बंदे बाथरूम मर गए हैं, साबुन गिर गया पैर के नीचे, स्लिप हुए, सिर फटका मारा, खत्म, नहाते नहाते गए, डेंजरस हो जाता है वही चीज। आप सोचते जहाज में यार पानी में जाए इतना खतरा है, अरे बाथरूम में नहाना इतना बड़ा खतरा है भाई, आंख में आपने शैम्पू लग गया, अब दिखाई नहीं दे रहा, स्लिप किया, खत्म हो गया, हो चुका है ऐसे केसेस। चलो आगे करें, ये तो समझ आ गया ना आपको।
यस सर। अब मैं तो अगर सिर्फ आपको पीपीटी दिखाऊं तो कुछ समझ तो आएगा नहीं, तो आई हैव टू इंक्लूड अदर थिंग्स आल्सो। अब ग्रेड बी पे आते हैं, क्योंकि जब मिडशिप सेक्शन करेंगे तो उसमें ये नंबरिंग लिखी जाएगी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, डी ग्रेड, ई ग्रेड लिखा होगा। फिर आप पूछोगे क्या चीज है, तो आप समझ आएगा ये है क्या। परसेंटेज ऑफ कार्बन हमने कम क्यों रखा है इसको, चलो ज्यादा क्यों नहीं किया, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते। 0.21 हमने क्यों रखा है, 0.5 क्यों नहीं किया, 1 क्यों नहीं किया, 2 क्यों नहीं किया, क्या हो जाएगा उससे? कार्बन ज्यादा करने से स्टील क्या होगा, ये सब पढ़ा दिया अभी। क्या होता है कार्बन में, कार्बन से क्या हो जाता है? अरे सर ब्रिटल हो जाता है, ब्रिटल, हाँ बिकम सर। टू। पिग आयरन में 4% है, वो तो टू ब्रिटल। सर तो हम स्ट्रॉन्ग कम करने के लिए कर, कार्बन कम रखेंगे सर स्टील हम को। कम रखेंगे। ये आपको सिर्फ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, दिमाग में रखोगे कार्बन ज्यादा होगा तो वो ब्रिटल हो जाएगा, हार्ड होगा लेकिन ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए हम कम करते हैं। मैंगनीज इसमें 0.8% है, मैंगनीज इसमें टफनेस देने के लिए होता है, तो 0.8 परसेंटेज ऑफ कार्बन मिनिमम, तो 0.8 इंटू 0.21% हो जाएगा। सिलिकॉन वही है 0.35, phosphorus 0.035, sulfur 0.035, UTS 400 to 520, yield strength 235, percentage elongation 22। अब इसमें impact test is done at 0 degree Celsius। तो 0 degree Celsius में लैब में impact test is done on this section of steel used। You know this is destructive test, impact test। All your test is destructive test। एक बार ऐसे एग्जाम में आया था डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तो पता नहीं लोगों ने कहां से उठा के, ये इंटरनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कहां से उठा के नेट से उतार के शुरू कर दिया, कहां का टेस्ट है पता नहीं, और कम से कम 50% लोगों ने वही आंसर लिखा, सबके रॉन्ग हो गए, लाले पड़ गए उनके पासिंग के यहाँ इंटरनल एग्जाम में, हालत खराब हुई थी उनकी, पेपर वॉज सो बैड फॉर देम। चीटिंग और किए होंगे लास्ट सर। बैच में है कॉपी किया होगा और क्या, एक दूसरे को इंटरनल में दे दिया होगा, सब लोग एक दूसरे को वही आंसर दे रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है, और सबका मैंने काट दिया, क्यों पता लग गया कॉपी किया, सबका काट दिया मैंने। तो समझ के करो, ये थोड़ा कि कुछ भी आ गया चलो लिख दो भाई, हाँ भाई उसने सही लिखा है हम भी लिख देंगे। बी ग्रेड स्टील। अब आता है डी ग्रेड। अब ये बेसिकली पोलर रीजन्स में जो जाते हैं शिप्स, जो आपके एबीसी क्लास के हैं, पोलर कोड के, जो पोलर कोड में क्लासेस आएंगे एबीसी, उनमें ये डी ग्रेड स्टील, आर्टिक डी ग्रेड स्टील लगाया जाता है या ई ग्रेड लगाया जाता है। सो हियर द परसेंटेज कार्बन इज 0.21, मैंगनीज इज 0.6, सिलिकॉन इज 0.1 to 0.35, फॉस्फोरस सल्फर वही है, बट यहाँ द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम टेक्स प्लेस। बाकी ए एंड बी में एल्युमिनियम नहीं था, इसमें 0.015 percentage of aluminum is there, UTS is almost same, yield strength is same, elongation is same, impact test is done at minus 20 degrees Celsius। So your impact test is done at minus 20 degrees Celsius। So this is your icebreaker, so you know this is an impacted ice is there। So special grade of steel used in parts which is subjected to cryogenic temperatures, very low temperatures। So UTS is 435 to 510, yield strength is 310, 80% of UTS absorbs 40 joules of energy at minus 55 degrees of Charpy impact test, normally used for icebreakers। So you can do from minus 20 to minus 55 and all, that is for icebreakers। So it is notch tough steel, because why it is notch tough steel? Because this is Charpy V notch test done. So this steel can resist the spread of your crack and higher strength. So it is used for structure greater than 25 mm thick, especially for polar regions. Now we come to grade E
grade E steel properties. Grade D may you had aluminum, grade E may there is no aluminum. So here your carbon is 0.18, less. Percentage of manganese is 0.7, silicon is same, phosphorus same, sulfur same, no aluminum now. UTS is 400 to 520, yield strength 235, percentage long as 22. Here your impact test is done as minus 40 degrees Celsius or lesser. And this is extra notch tough steel because your treated grade D steel is used for heat treatment. So this is in excess of 50 mm thick. So this is used in shear strake, your bill strake and keels. All of your are high stress regions where you use E grade steel. So in your temperature also is minus 40 degrees Celsius for grade E steel. So this areas we have done. Percentage aluminum at part of that's 0.015. Temperature applicable for impact test of grade E is minus 40. How is your high tensile steel of grade E represented? That is AH. Areas where your grade A is used for all your mild steel areas, that is your bulkheads and all, they are all grade A steel. So we are finished with your grades of steel. चला से करते हैं, अभी आपका 5 मिनट है तो वीडियो देख लेते हैं ग्रेड्स ऑफ स्टील पे. Okay. या हीट ट्रीटमेंट देख लेते हैं. Look, there are 8 core functions of any business. And after having worked with thousands of entrepreneurs, I think it's very important to get students to do lab in the classroom, but sometimes the cost is prohibitive and a lot of schools just don't provide the facilities. And so it's important sometimes to look at labs that are not as costly. For this lab, all you'd really need is a Bunsen burner with a source of natural gas, a couple pliers, and the most expensive item, a bobby pin, or 2 or 3 or 4, depending on how you want to do it. I think it's real important to look at some of the current items going on in science, and one of the big majors where students are majoring in is material science or materials engineering. And one of the courses that they might take in a class like that or in civil engineering is an entire course on steel and how the steel is composed and how steel can vary. Now, why would something like this be important? Some people say that when the 2 towers crashed, the planes crashed into them, that the intense burning of the jet fuel, the heat changed the structural
crystalline structure of some of the steel, and that helped facilitate some of the crash. It's important that when construction engineers are building something with steel, that they use the correct steel for that particular purpose. If you look at chef's knives, they will have a certain type of steel called chromoly steel or moly steel or hardened steel. There are different types of steel. And one of the easy ways to look at that is to look at some of the properties of a bobby pin. What you might want to do is take a bobby pin and just have the students analyze and get a feel for how that bobby pin feels. You can see I let it go and it twists back. It's got some flexibility. Well, it's got a particular crystalline structure. How is that crystalline structure going to change if we heat it? Let's take a bobby pin. But now recognize, in the Bunsen burner flame, it's going to get very, very hot. So what I'm going to use are 2 pliers to hold this. You might also want to recognize that there could be a plastic coating on the bobby pin, and so you might get some smoke out of that. Don't worry about that. It's not going to be dangerous, but some people might worry about that. So let's turn on the Bunsen burner flame. Remember, this flame, when it's optimal, is nearly invisible. And so you have the flame, and you can see that hot part of the flame as the inner cone. So what I'm going to do is take these 2 pliers and just hold it in the flame. And I'm just going to hold it right there. You can see some of that burning off. And you can see that I've got it red hot. Can you see that? And what I'm going to do is I'm going to take it out of the flame and just let it cool. Now recognize that steel will take a little while to cool. And so as I'm doing that, I'm going to turn off the Bunsen burner flame just to be on the safe side. And then what you have to do, and it's pretty tough to see visually, but you want to see if it changes any. And you see that it has lost some of its springiness. And you've had a portion of a crystalline change in there, and that's why it's lost some of its springiness, as they say. Now, this is what we call annealing. Annealing is where you heat it to a particular temperature and then let it cool slowly. So you could take this bobby pin, you could have a bobby pin for your standard or comparison, and you could try other properties or other techniques. Turning on the Bunsen burner flame again. Last one, we heated it to red hot, and then we let it cool slowly. And I'm going to put this right over here. Is that appropriate? And I'm going to this time cool it very quickly. I'm going to pull it apart a little and use the pliers. And we're going to quench it. We're heating it in the flame. You can see that it got red hot. And now I'm going to quickly put it in the water to cool it. Are you able to see some of the solid? It's precipitating. What we have here, as I said, is in steel we have multiple types of crystalline structures. We have one type where it will only be able to contain a small part of the carbon. And that's one of the parts of steel, is the amount of carbon that you have. One type of carbon, the amount will make it, well, let's analyze it. Let's look at this and see what happens. We've heated it to red hot, we've cooled it quickly, and let's see what happens. I don't know if you could hear it, but it was very brittle. And so what we've done is change the crystalline structure in a situation where it was not able to, as we cooled it, contain as much carbon. So what we were able to see here is some of that carbon precipitating as iron carbides. And so we're pulling out some of that carbon since the new crystalline structure can't hold it.
Now, if you are in an AP class, the handout, the write-up will talk about some of this in terms of the face-centered or body-centered. So you can get some more details in the handouts, but you can see that it could not contain as much carbon, and so some of it precipitated. Let's try one more. Gotta bend it a little. Hold it in the pliers. Remember, this is gonna get very hot, so that's why the pliers are there. Gotta heat it. You can see some of that plastic burning off. That's some of the initial flame yellow component. Okay. I've got it red hot again. Now I'm going to cool it in the water just like I did before. Okay, you can still see some of the iron carbide coming out. Now if I would try to break this right now, it is going to be brittle just like the last one. But what I'm going to do now is I'm going to heat it. Well, guess what? We'll have to do that again. Let me just show you. It is very brittle, and what you want to do is, as you cool it, what you want to do is gently heat it in the flame again and hopefully lose some of that brittleness. So now you can have a break here. You can have a break because the next class is due. So let's have a Okay, break. sir. Okay, sir.